Hi everyone, this is Shruti Pandey from the Department of Chemical Engineering at IIT Kanpur, and I welcome you all to lecture number 2 of polymers. So, in the previous lecture, we have just learned the introduction about the polymers, like what the word polymer it is. When it is broken down, breaks into poly and mer. Means poly means many and mer means unit. So basically, the term polymer can be defined as very large molecule having very high molecular masses, which are in the range of 10 to the power 3 to 10 to the power 7 units. So there are a large number of molecules and a high molecular mass. They are also referred to as macromolecules, and they are formed by joining of the repeated structural units, which are known as monomers. Okay, so we can say कि monomers they are the building blocks of the polymers. Okay, when you repeat the monomers or you join the monomers, the large number of monomers together, you can form a polymer. Okay, and um, those monomers they are linked to each other by the covalent bonds. They are proper bonds, and the process of formation of polymers from these monomers is known as polymerization. Okay, so this was a definition of polymers. After that, we came on to the classification of polymers. So the classification of polymers is based on the various sources. So okay, I'll also write down that what we had done in the last lecture. Just a quick recap. Okay, so this classification of polymers. Okay, so we have learned that the classification of polymers is on different bases. So actual definition and the detailed definition and the examples we have already discussed. I'm just for the purpose of revision, I'm just writing down the classification, just the names. So when it is based on the sources, then we have natural polymers, then we have semi-synthetic polymers, and then we have synthetic. Synthetic means man-made. It is not natural. Anything whose origin is not natural, it is known as synthetic. Then we have on the basis of structure, we have linear, then branched, and cross-linked. Then on the basis of number of monomers, they are the types of monomers. When we have only one type of a monomer, which is including in the formation of the polymer, then it is known as homopolymer or homomer. And when we have two or more than two types of monomers which are participating in the formation of a polymer, then it is copolymerization, copolymer. Then on the basis of molecular forces of attraction.
लाइक द टाइप ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड देयर स्ट्रेंथ उस पर भी डिपेंड करता है. तो फर्स्ट वन वाज इलास्टोमर. तो बिकॉज उनका जो प्रॉपर्टी होता है, बाय प्रॉपर्टी दे आर इलास्टिक, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर. इलास्टोमर्स में क्या आते हैं? रबर. देन वी हैव फाइबर. हियर दे आर टफ and their forces of attraction are stronger. Then we have thermoplastic. The forces of attraction here are intermediate between elastomer and the fibers, but thermo means, there is some role of temperature over here. So these thermoplastic polymers, they have this special property that they will soften when you increase the temperature, and on decreasing the temperature, they will again harden. ठीक है, तो आप जितनी बार आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वो सॉफ्टन हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, और जितनी बार आप टेम्परेचर कम करोगे वो उतनी बार हार्ड हो जाएंगे. ठीक है, तो दे हैव एन दे कैन इंस्टेंटली react to the change in temperature. And the last one we have thermosetting. ठीक है, but how are thermosetting polymers different from thermoplastic? Thermosetting polymers, they just when they are being produced or when they are being manufactured, only then they can react to the increase in temperature. उसके बाद they become resistant to the change in temperature. ठीक है, as I told you, they become heat resistant. ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है थर्मोप्लास्टिक में और थर्मोसेटिंग में, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस. Thermosetting polymers, after the proper manufacture, they do not respond to the change in temperature. वो बहुत ज़्यादा सेट हो जाते हैं, जैसे नाम में है थर्मोसेटिंग, वो सेट हो जाते हैं, and then they will not soften even on increasing the temperature. ठीक है, and the last was on the basis of modes of polymerization. इसमें we have the addition polymerization. So modes of polymerization is basically the mechanism, or you can say the method or the mechanism by which the polymers are formed. So there are two methods or mechanisms which are important: the addition polymerization and the condensation polymerization. ठीक है, ये दो मैकेनिज्म्स होते हैं जिनसे पॉलीमर्स बनते हैं. ठीक है, सो ये जो modes of polymerization है, this we have not discussed in detail yesterday. I just told you the definition, in short, that's it. So, because today we are going to discuss these topics in detail, we are discussing the actual mechanism. We'll write down the mechanism today. So, let's start with this. So, today we will do the types of polymerization reaction. First is addition, or it is also known as a chain growth polymerization, or चेन ग्रोथ. चेन ग्रोथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि एडिशन में चेन जो होती है दैट इज ग्रोइंग इन साइज, बिकॉज ऑल द मॉलिक्यूल्स जो भी मोनोमर्स होते हैं दे आर सिंपली एडिंग. इस वजह से बिकॉज ऑफ द चेन ग्रोथ उसको चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं. देन वी हैव कंडेंसेशन. और
two-step growth polymerization. Okay? So these are the two types of mechanisms that we will discuss. Okay? So today we will start with addition polymerization. Okay, so what happens in addition polymerization? The molecules of same monomer और different monomers. ठीक है, तो as I told you कि polymer में जरूरी नहीं है कि एक ही type का monomer हो. ठीक है, because we have two types of polymers in that respect, that is homopolymer and a copolymer. ठीक है, so you can have same monomer also and the different types of monomers. They add together on a large scale to form a polymer. ठीक है. Now, some important points I will mention in addition polymerization and then we will move on to the actual mechanism. इसमें क्या है? First, you should always remember one or multiple types of monomer. They can take place simply. They simply add together on a large scale. मतलब खूब सारे जो monomers हैं, चाहे वो एक type का हो, चाहे multiple type का हो, they will add together on a large scale to form a polymer. ठीक है. Now, another important point is the monomers which are used in this kind of the mechanism or a polymerization, they are generally the unsaturated compounds. Okay, because in organic chemistry also we have learned कि जो unsaturated compounds होते हैं, they are more reactive and that is why they react easily because of the presence of unsaturation. ठीक है, so here also the same thing applies कि जो unsaturated compounds होते हैं वो simply add हो जाते हैं. The monomers, unsaturated compounds, the monomers are the unsaturated compounds. For example, we have alkenes, we have alkadienes, or similar kind of their derivatives, etc. ठीक है? This amount of polymerization is simply leads to the increase in the chain length. ठीक है, और इसी वजह से उसको बोलते हैं chain growth polymerization. तो obviously, when monomers are simply being added, the chain length will increase. And जो chain growth होती है, it basically it involves the formation of either the free radical or the ionic species. So this whole process, it includes the formation of free radicals or the ionic species. But generally, I mean, the most common mode is the free radical governed addition. ठीक है? So जो हम like which like we'll be only discussing about the free radical mechanism in this chapter, uh, and not about the ionic species wala mechanism. So these were some important points which were related to the addition polymerization. Now we will simply move on to the free radical mechanism.
फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस कि इस केस में, एडिशन के केस में, ऑलवेज द मोनोमर्स विल बी द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, बिकॉज जो एडिशन हो रहा है उसमें कोई भी चीज रिमूवल नहीं हो रहा। तो मतलब वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए या फिर नंबर ऑफ बॉन्ड्स को सेटिस्फाई करने के लिए द मोनोमर्स शुड ऑलवेज बी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। नाउ इन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, these monomers, these unsaturated monomers, they are polymerized in the presence of a free radical generating initiator। ठीक है, फ्री रेडिकल आएगा कहाँ से? भाई फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है तो देयर शुड बी समथिंग टू जनरेट द फ्री रेडिकल, स्टार्ट करने के लिए रिएक्शन को। so there it is the presence of a free radical generating initiator is required। so this is basically a kind of a catalyst, and I also give you the example। so the important point that you should remember is, in the presence of free radical generating initiator, which is basically a kind of a catalyst over here। ठीक है, and some of the examples of these initiators are, जो common examples होते हैं, generally use होते हैं, they are benzoyl peroxide, then we have acetyl peroxide, butyl peroxide, etc। So these are the common examples। ठीक है, so um, we will do this mechanism। हम we'll choose a reaction or the polymerization of ethene to polythene। ठीक है, so the polymerization of ethene to polythene, it consists of either heating or exposing the mixture of ethene to light। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो what we take is as the reactant, it is simply the mixture of ethene with a small amount of benzoyl peroxide initiator। ठीक है, तो आप मोनोमर लोगे, ये तो एक मतलब स्पेसिफिक केस, हम we'll do the mechanism for a specific case। ठीक है, but if we talk about the generalized thing, then we should take a mixture of the monomer which is there in the polymerization reaction, and some peroxide initiator। ठीक है, and then we will expose it, either we will heat it or expose it to light। ठीक है, after that the process will start automatically, and this process is basically a three-step process, जिसमें कि the first step is the chain initiating step, the second step is the chain propagating step, and the third step is the chain terminating step। ठीक है, तो I'll explain all these three different steps one by one। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो पूरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे, तो किसका पढ़ेंगे? इथीन टू पॉलीथीन। ठीक है, so इसके लिए we will be taking the benzoyl peroxide initiator। Now the process starts। The first step is the chain initiation।
chain initiation step. ठीक है, तो what happens is the when we add, see, this benzoyl peroxide जो benzoyl peroxide catalyst होता है, benzoyl peroxide initiator, it is basically a free radical initiator, so it breaks down into two free radicals. So एक molecule, one molecule of benzoyl peroxide will break down into two benzoyl free radicals, and which will correspondingly, which will after this reaction will break down into phenyl free radical. ठीक है, so basically this phenyl free radical is what is starting the reaction. ठीक है, तो ये पूरा कैटलिस्ट अपने आप में ब्रेक होता है और फिनाइल रैडिकल को जनरेट करता है, एंड दिस फिनाइल रैडिकल इट adds to the ethene double bond. Because ethene is an unsaturated compound, so this phenyl free radical will add to the ethene double bond, which will generate a new free radical. ठीक है, and this is a larger free radical. ठीक है, तो if we want to write this uh, in the form of a reaction, then it will look something like this. So what is benzoyl peroxide? It is, I'll write down the structure. It is C6H5, C double bond O. It has a symmetric structure. C6H5. This is benzoyl peroxide. Okay? So this is actually a catalyst, and it breaks down into C6H5. The double bond will remain as it is, and this is the free radical. तो बेसिकली हो क्या रहा है कि ये वाला जो बॉन्ड है, this is breaking down. ठीक है, the bond between two oxygen atoms, it is breaking down into two free radicals. ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे ये 2 आएगा, and this further breaks down. CO2 is released, and this breaks down into phenyl free radical. ठीक है, तो you should understand कि बेंजाइल radical अलग है और phenyl radical अलग है. So it is 2C6H5 radical यहाँ पे. ठीक है, so this dot is basically represents the free radical, and CO2 is already released. ठीक है, तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं फिनाइल फ्री रेडिकल. ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस इज दिस फ्री रेडिकल नाउ adds on to the ethene. ethene हमारा मोनोमर है in this case. So this is C6H5 plus CH2 CH2. Ethene is CH2 CH2. This is ethene. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो सिंपली एडिशन होगा, जैसे हम नॉर्मल ऑर्गेनिक रिएक्शंस में देखते हैं, जो सिंपल एडिशन होता है टू दी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स और दी डबल बॉन्ड्स और द ट्रिपल बॉन्ड्स. Similarly here also, this will be C6H5, this will be CH2, this will be CH2, and this free radical will be over here. ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये जो डबल बॉन्ड है CH2 का between the two carbon atoms, this double bond is opening. ठीक है, तो एक तरफ से तो ये C6H5 ऐड हो रहा है, और दूसरी तरफ से because it is you do not have any other thing, so that is the free radical over here. ठीक है, तो that free radical is on this last carbon atom, on the carbon atom to which nothing has been added yet. ठीक है, एक कार्बन एटम की तरफ C6H5 ऐड हो गया और एक कार्बन एटम में फ्री रेडिकल ऐड हो गया, ऐसा समझो. ठीक है, so this is the kind of addition. Then we have the next step, which is known as the chain propagating step. The second step is chain propagating step. ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो फ्री रेडिकल which was formed in the first step, which is the chain initiation step,
that uh, it adds up to another molecule of ethene. ठीक है, because see it is a free radical. The free radicals are very reactive species. ठीक है, जैसे कि unsaturated compounds are very reactive, वैसे ही free radical is also it is a much more reactive. So what happens is the free radical which is formed in the first step, it reacts with another molecule of ethene which results in the formation of the bigger sized radical. ठीक है, तो जब दूसरे molecule of ethene के साथ में react करता है तो it forms another radical and that is even bigger in size. ठीक है, and this is not a single step. This step happens multiple times. I mean the repetition of this particular step, it forms the bigger and bigger radicals. ठीक है, जैसे जैसे repeat होगा वैसे ही वैसे नए नए इथीन मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्ट करके it will be basically increasing the size of the chain. ठीक है, and this is that is why it is known as the chain propagating step. ठीक है, क्योंकि साइज ऑफ द चेन बढ़ रहा है, चेन प्रोपोगेट हो रही है. तो आई राइट डाउन द इट इन द फॉर्म ऑफ द रिएक्शन. So okay, with blue we have this C6H5 CH2 CH2 is free radical. ठीक है, ये है which was formed in the first step. This will now again react with the some ethene molecule. ठीक है, and it will result in the formation of this. And now the free radical would be on this last carbon atom. ठीक है, जैसे पहले स्टेप में हुआ था, जैसे आई टोल्ड यू कि दिस डबल बॉन्ड इज ओपनिंग. So basically this complete thing is added to one carbon atom of ethene and the free radical is getting added to the other carbon atom of ethene. ठीक है, तो इस तरीके से एडिशन हो रहा है and at last carbon you have this free radical. So carbon whose valency is not complete. See, every carbon should have should be attached to four things or it should have four bonds. ठीक है, so you should check this कि any carbon which is not completing its valency or which is not connected to four bonds is basically the valency is incomplete. ठीक है, तो या तो वहां पे उस टाइम पे ड्यूरिंग द रिएक्शन या तो कोई आयोनिक स्पीशीज होगी, मतलब कार्बोकेटाइन काइंड ऑफ अ थिंग, or it will be free radical. So that is why in the last carbon you can see we have CH2. So basically it is attached to, it has three bonds. ठीक है, so one valency is left and that is because one atom of carbon is not bonded to any other atom. Sorry, any other element. ठीक है, so this is a valence electron which is above the carbon atom. This is a free radical. Now what will happen? Now this is not a single step. ठीक है, this will repeat again and again. ठीक है, तो अगर मैं इसको और जब एक और इथीन मॉलिक्यूल आया, सपोज कि ये फ्री रेडिकल बना, नाउ अगेन देयर विल बी इथीन मॉलिक्यूल इन द रिएक्शन मिक्सचर. ठीक है, तो वो इथीन मॉलिक्यूल व्हेन इट रिएक्ट्स टू दिस, तो हमारा नेक्स्ट क्या बनेगा? Four carbon atoms were there in this. Then we have two more carbon atoms. So four इधर and हाँ this. ठीक है, तो after addition of with one more ethene molecule, this is the complete structure. ठीक है, ऐसे करके this step will be repeated multiple number of times and after some time when you see the chain is very long. ठीक है, तो हम उसको short में like even when we do the further polymerization reaction examples, we will see कि obviously we will not write down the complete chain because it is a very long chain. ठीक है, तो हम उसको short में denote करने के लिए इस तरीके से लिखते हैं. Because C6H5 जो है वो बिल्कुल end में है. ठीक है, and CH2 जो है वो that is in the other end. So basically C6H5 and CH2 with free radical, they are the two extremes. और उसके बीच में we just have CH2.
again and again. So that is why we simply write it as, this is the free radical. एंड यहाँ पे हम ब्रैकेट्स यूज करते हैं मोनोमर के अराउंड। जो हमारा मोनोमर है उसमें सिर्फ दो कार्बन एटम्स है, राइट? इस वजह से हम तीन कार्बन एटम्स या फिर एक कार्बन एटम के अराउंड ब्रैकेट नहीं यूज करेंगे, बिकॉज मोनोमर हैज टू कार्बन एटम्स, सो वी विल पुट दिस ब्रैकेट अराउंड द मोनोमर इटसेल्फ। और यहाँ पे एन लिख देंगे, एन, टू डिनोट कि दिस ये जो ब्रैकेट है दिस इज अकरिंग एन नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, एंड दैट एन कैन बी अ वेरी लार्ज नंबर एज वेल। ठीक है, तो ये जो चेन प्रोपगेटिंग स्टेप में यू कैन हैव दिस लार्ज एन ओवर हियर, और ये खूब सारी लंबी चेन बन जाती है। ओके, so this is a chain propagating step because the chain length is being increasing. नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप होता है दैट इज नोन एज द चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आफ्टर द चेन हैज ऑलरेडी ग्रोन लॉन्ग, so at some stage of the reaction what will happen, जो हमारा प्रोडक्ट रेडिकल है which is formed in this chain propagating step, it reacts with another radical। ठीक है, प्रोपगेटिंग स्टेप में क्या हो रहा था, इट इज रिएक्टिंग विद द इथेन मॉलिक्यूल, वो कंप्लीट मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा था, दैट इज वाई चेन वाज प्रोपगेटिंग। लेकिन एक अल्टीमेट एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में क्या होगा कि इट विल रिएक्ट विद अनदर रेडिकल जो कहीं और मिक्सचर में बन रहा होगा। ठीक है, सी दिस रिएक्शन इज नॉट हैपनिंग वन। ठीक है, मतलब दिस ये जो पूरे स्टेप्स हो रहे हैं ये पूरे रिएक्शन मिक्सचर में हो रहे हैं, सो दिस देयर विल बी मल्टीपल free radicals which are being formed in the reaction mixture। ठीक है, तो when two radicals they react with each another or they add to each other, so they form the polymerized product। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही अनसैचुरेटेड नहीं, बट ये दोनों ही are very reactive species, so that is why they will add together and they form the final product, and this step is known as the chain terminating step। क्योंकि उसके बाद जो होती है वो फिर आगे चेन का लेंथ बढ़ता नहीं है इस स्टेप के बाद में। ठीक है, सो दैट इज व्हाई द थर्ड स्टेप वुड बी हियर, चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। ठीक है, नाउ these free radicals will combine in the different ways to form the polyethylene। ठीक है, तो जैसे सपोज करिए आई एम टेकिंग द सिमिलर काइंड ऑफ फ्री रेडिकल जो यहाँ से बना है, दिस विल बी वेरी लॉन्ग, वो इंडिविजुअली बहुत लॉन्ग होंगे। दिस इज द ब्रैकेट एन। ठीक है, सिमिलरली कोई एक और ऐसा फ्री रेडिकल होगा समवेयर इन द मिक्सचर, दूसरा फ्री रेडिकल चेन। ठीक है, these are the two chains and when they will join together। ठीक है, क्योंकि तो यहाँ पे जॉइनिंग जो होगी बेसिकली कहाँ से होगी, ये जो दो कार्बन एटम्स हैं विच आई टोल्ड यू कि देयर वैलेंसी इज इनकम्प्लीट, जिनके ऊपर यू हैव दिस फ्री रेडिकल, तो जो एडिशन होगा, जो सॉरी जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, so दैट विल बी बिटवीन दीज टू कार्बन एटम्स विच आर हैविंग द फ्री रेडिकल। ठीक है, तो चेन एक चेन सीधी और एक चेन उल्टी तरफ से, जस्ट यू जस्ट रिवर्स दिस चेन, so you will get the another longer chain which will be just double the size of this। तो वो कैसे दिखेगी, C6H5 CH2 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 CH2। ठीक है, now this is the
ये फर्स्ट चेन का फ्री रेडिकल वाला कार्बन है। नाउ यहाँ से ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है एंड दिस कार्बन एटम इज द फ्री रेडिकल कार्बन एटम ऑफ द सेकंड चेन। ठीक है, तो यहाँ पे ये बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। देन अगेन वी हैव CH2 एंड दो CH2 और हैं, and where we have C6H5. So C6H5 is at both the ends, you can see, and there is the bond formation between these two carbon atoms. And obviously there is a bracket over here to denote it as a longer chain, and the other bracket is over here. ठीक है, तो ये बहुत लंबी चेन है and this is the final polymerized product which is polyethylene. ठीक है, so this is how this addition polymerization takes place using the free radical mechanism. ठीक है, आयोनिक भी हो सकता है जिसमें दे कैन यूज द कार्बोकेटायन आल्सो इन द केस, बट यहाँ पे अभी हम विल ओनली डिस्कस द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। नाउ यू शुड आल्सो नो वन थिंग कि जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा उसमें वो जो क्लासिफिकेशन है दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट दैट वाज बेस्ड ऑन डिफरेंट थिंग्स, राइट? तो जो addition polymers होते हैं they can be formed either by the polymerization of a single monomer. ठीक है, तो if they are using the single monomer in the process then they are known as homopolymers. जो final compound बनता है that is homopolymer. ठीक है, जैसे कि this is polythene, ठीक है, we have only used ethene as a polymer, as a monomer. ठीक है, but in addition mechanism itself the polymers they can also be made from two different types of monomers and they are known as copolymers. ठीक है, तो अगर दो दो डिफरेंट टाइप्स या फिर मल्टीपल भी हो सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर्स हैं देन दे इट विल बी नोन एज कोपॉलीमर्स एंड कोपॉलीमर्स कैन आल्सो बी फॉर्म्ड यूजिंग द एडिशन मैकेनिज्म। ठीक है, तो इफ वी I'll write it down in the next page. This is one example where Buna S, which is a kind of a synthetic rubber, it is formed by the polymerization of buta 1,3 diene, which is an unsaturated because it is diene, and styrene. Both of these compounds have double bonds. They are unsaturated compounds, and they follow addition polymerization to form Buna S. So this Buna S is a copolymer. ठीक है, तो इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो वो तो ओके, so for addition maybe if we talk about addition polymerization, so one can be copolymers and they can be homopolymers. ठीक है, तो homopolymers में I mean the example is simply polythene which we just discussed. Mechanism would be simply like that. And in case of copolymer, if example is Buna S, which is a kind of a synthetic rubber. ठीक है, तो I'll write down the reaction. So it basically uses 1,3 butadiene. Yes, this is one monomer and we have another monomer which is styrene, C6H5, CH double bond, CH2. So this is what? This is styrene. I'll write down the names because names are also very important. ठीक है, आपको सिर्फ स्ट्रक्चर से काम नहीं चलेगा।
Learning names in this chapter is as important as knowing the structure. Okay, so 1 comma 3, buta diene. Diene because we have two double bonds. ठीक है, एंड इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज कि सिर्फ एक एक मॉलिक्यूल से तो पॉलीमर बनेगा नहीं, ठीक है, यू नीड मल्टीपल मॉलिक्यूल, सो दैट इज व्हाई इन द रिएक्शन दे यूज एन ओवर हियर, एन मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस, एन मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस विल फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ द पॉलीमर। ठीक है, तो ये जो चेन बनेगा ये दिस विल बी अ काइंड ऑफ एन ओपन चेन। ओपन मतलब बहुत बड़ी होगी, ऑब्वियसली एंड होगा कहीं ना कहीं पे, बट जस्ट टू शो कि ये बहुत बड़ा है, वी आर नॉट क्लोजिंग इट। दिस इज नोन एज ब्यूना एस। ठीक है, तो ये ब्यूना कहाँ से आया? ब्यूना आया है ब्यूटा डाइन से, और एस इज फॉर स्टाइरीन। ठीक है, तो इस तरीके से हर पॉलीमर में आपको जो नाम होता है हर पॉलीमर का, दैट इज समवॉट रिलेटेड टू द मोनोमर्स फ्रॉम विच इट इज बीइंग फॉर्म्ड। ठीक है, तो यू विल नॉट गेट यू विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड व्हाइल यू आर नेमिंग इट। ठीक है, तो इवन इफ somebody asks you कि what will be the monomers, so because of the name of that polymer itself, you'll be able to tell कि what would be the monomers। ठीक है, so this buna is basically denoting 1,3 butadiene, and this S is for styrene। ठीक है, तो आप देखो इस केस में भी हुआ वही है जो जैसे हमारा पॉलिथीन में क्या था कि जो डबल बॉन्ड्स थे दैट वर गेटिंग ओपन। ठीक है, बिकॉज ऑफ द डबल बॉन्ड दे वर गेटिंग ओपन, तो सिमिलरली यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ओपनिंग ही हो रहा है, बट इट इज ओपनिंग बिटवीन द टू डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोमर्स। ठीक है, तो आप देखो कि देखो लाइक इफ आई वांट टू ड्रॉ इट, ठीक है, एक तरफ ये है और एक तरफ ओके आई वी हैव दीज टू थिंग्स। ठीक है, अब हो क्या रहा है, ये वाला जो बॉन्ड है इट विल गेट ओपनड। ठीक है, तो यहाँ पे एक बॉन्ड आ जाएगा, मैं इसको रेड से कर देती हूँ। ठीक है, ये वाला जो बॉन्ड है इट विल गेट ओपन, एक बॉन्ड यहाँ आएगा। ये वाला जो बॉन्ड है, दिस डबल बॉन्ड ऑब्वियसली व्हेन इट विल ओपन फ्रॉम बोथ द साइड्स, बॉन्ड कभी भी एक तरफ से नहीं खुलेगा। ठीक है, तो ये जो डबल बॉन्ड है इट विल गेट ओपन ओवर हियर। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली दिस डबल बॉन्ड इज ऑल्सो गेटिंग ओपन। ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड ओपनिंग का मतलब आप समझ रहे हो कि द इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन्वॉल्व इन दिस इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस डबल बॉन्ड बेसिकली दोज आर गेटिंग ट्रांसफर्ड। ठीक है, बॉन्ड आपस में ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विच आर फॉर्मिंग दैट बॉन्ड। ठीक है, तो आई मीन दिस बॉन्ड बेसिकली आप ऐसे समझो कि जो एक बॉन्ड होता है वो दैट इज इक्विवेलेंट टू टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो वन इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग ओवर हियर, इज गोइंग ओवर हियर, एंड वन इलेक्ट्रॉन इज गोइंग ओवर हियर। ठीक है, नाउ सिमिलरली ये वाला जो डबल बॉन्ड है इसका भी वन इलेक्ट्रॉन विल गो ओवर हियर एंड वन इलेक्ट्रॉन विल गो ओवर हियर। ठीक है, तो जो यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये आया एक ये आया, दे बोथ आर फॉर्मिंग वन बॉन्ड ओवर हियर। ठीक है, तभी आप देखो जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें भी डबल बॉन्ड है, ऐसा नहीं है कि डबल बॉन्ड ओपन होके कहीं इलेक्ट्रॉन्स चले गए। ठीक है, सो दोज टू इलेक्ट्रॉन्स दे विल अगेन फॉर्म अ डबल बॉन्ड ओवर हियर। ठीक है, और इसके ओपनिंग से एक बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया। नाउ व्हेन दिस डबल बॉन्ड विल ओपन ऑफ स्टाइरीन, तो वन इलेक्ट्रॉन विल कम ओवर हियर। ठीक है, और वन इलेक्ट्रॉन विल यहाँ पे आ जाएगा, सो एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। ठीक है, और ये C6H5 विल रिमेन अटैच्ड टू दिस कार्बन एटम, दिस हैज नो रोल ओवर हियर। ठीक है, तो सिमिलरली जब ये बिकॉज ऑफ दीज टू इलेक्ट्रॉन्स ये वाला बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो आप देखो यही पूरा यही चीज है। ठीक है, तो जस्ट
ये दोनों डबल बॉन्ड की जगह एक डबल बॉन्ड बचेगा बीच में, दैट्स इट. So in one complete unit, there will be a single double bond in one complete unit. ठीक है. So this is basically what is happening in the case of copolymerization of using the addition mechanism. Okay, and these names are very important. Just remember them, learn them. Okay, so there, we will first do some important addition polymers, the polymers which are formed using this mechanism. Okay, so some of the they are the common ones. They are polythene. Then we have poly tetra chloroethane, which is in short form it is known as Teflon. Then we have polyacrylonitrile, that is known as PAN, PAN. Okay, so these are the common ones. So in polythene, polythene itself is divided into two other categories. That is the low density polythene and the high density polythene. ठीक है, तो even if you look at some polythene packets, ठीक है, कोई जो wrappers होते हैं किसी भी चीज के, कोई मान लीजिए कोई electrical appliance है and you have a that polythene wrapper which is wrapped around it. ठीक है, तो उसमें आप अगर आप देखो तो आपको कभी शॉर्ट फॉर्म में HDPE और LDPE दिखाई पड़ेगा. ठीक है, सो दैट इज बेसिकली दे वांट टू टेल कि ये जो पॉलिथीन उन्होंने यूज किया है ये कौन से कैटेगरी में आता है. तो LDPE इज अ लो डेंसिटी पॉलिथीन एंड HDPE इज द हाई डेंसिटी पॉलिथीन. ठीक है, दीज आर द फुल फॉर्म्स. नाउ द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन दीज आर इन द कंडीशंस ऑफ पॉलीमराइजेशन. ठीक है, तो जो दोनों का फॉर्मेशन हो रहा है, जो रिएक्शन हो रहा है, द कंडीशंस व्हिच आर यूज्ड इन दैट पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, meaning I am talking about the temperature and the pressure which is used in the polymerization reaction. They are different. Okay. Also, the catalysts which are used in these, जैसे as I told you, because addition polymerization हमेशा catalyst के साथ ही होता है. ठीक है, जैसे because we need some kind of a initiator to some kind of a compound to form the free radical or initiate the reaction. ठीक है, तो कोई ना कोई catalyst जरूरत होगा. So that is why first, the first difference is the conditions of polymerization, that is the temperature and the pressure used. Second difference is the catalyst. दोनों में ही different types के catalyst use होते हैं. So because of these two differences in the formation, जो result में differences आते हैं, that are the structure. Because you can see the name, which is low density and high density. तो जो स्ट्रक्चर बनता है दैट रिजल्ट्स इन द लो डेंसिटी एंड द हाई डेंसिटी ऑफ द पॉलीथीन एंड द प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज में सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज आर कि वो टफ होता है या फिर फ्लेक्सिबल होता है, और इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इफ वी कैन से कि पुअर कंडक्टर है कि इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, केमिकली इनर्ट है या फिर नहीं है. एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज प्रॉपर्टीज it is used, they both are used for making different types of substances. ठीक है, तो अलग अलग प्रॉपर्टी, क्योंकि क्योंकि पॉलीमराइजेशन रिएक्शन की जो कंडीशंस हैं वो डिफरेंट है, तो बिकॉज ऑफ दैट जो हमारा रिजल्ट है वो भी डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज एज वेल, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बोथ. तो बिकॉज ऑफ दीज डिफरेंसेस जो उनके एप्लीकेशंस होते हैं दे आर ऑल्सो वेरी डिफरेंट. ठीक है, नाउ बिकॉज it needs a lot of time, so we'll do it. We'll try to complete it in the next lecture, the low density polythene and the high density polythene, and then we'll move on to the several other examples